Now let us first discuss increasing functions. So हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं increasing functions, and more specifically increasing function we will first discuss strictly increasing function. I hope सभी ये समझ पा रहे कि व्हाट आर इंक्रीजिंग फंक्शंस. जो भी फंक्शंस एक पर्टिकुलर रेंज में कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे उन्हें हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस. और हमने देखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर पाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस. देयर फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस. सो एज पर द डेफिनेशन a function is said to be strictly increasing on interval a comma b if x1 less than x2 implies that f of x1 is less than f of x2 for all x1 comma x2 belonging to the range a comma b. I hope everyone is clear with the definition. So they say a function is said to be strictly increasing on this interval a comma b if x1 less than x2 implies that f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belonging to a comma b. इसका मतलब कि अगर हमें पता है कि x1 x2 से छोटा है, इसका मतलब ये एकदम 100% श्योर है कि f of x1 भी f of x2 से छोटा है. या फिर हम ऐसा कहें कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि f of x2 की वैल्यू f of x1 से बड़ी है. और इसी चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, अगर हम x को इनपुट बोले और f of x को आउटपुट बोले, सो इफ द वैल्यू ऑफ इनपुट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलवेज इंक्रीजेस. सो if x1 increases so then f of x1 also increases. So अगर x1 increase होके x2 हुआ then f of x2 would be greater than f of x1. Or in other words the function is said to be strictly increasing if if output continuously increases, if the output continuously increases with the input. Now this certainly raises a question that what is the difference between strictly increasing and increasing function. इंक्रीजिंग फंक्शन में भी हम यही कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में भी यही कह रही हूँ कि मैं फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ना ही चाहिए. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस है, और लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन विच इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. Let us understand the second type of function which is non-decreasing function. Now let us understand with this first understand the definition of this function, फिर हम इसे graphically समझेंगे, दोनों के बीच का difference graphically समझने की कोशिश करेंगे. So the definition of the definition of non-decreasing function says that a function is said to be non-decreasing on interval a comma b if x1 less than x2 implies f of x1 is less than or equal to f of x1 comma if f of implies f of x1 is less than or equals to f of x2. So non decreasing function की क्या definition कहती है, a function is said to be non decreasing on interval a comma b if x1 less than x2 implies f of x1 is less than or equal to f of x1 comma f of x2. यहाँ पे क्या था, it is less than f of x1, so f of x2 is always greater than f of x1, but ये कहता है f of x2 can be either greater than or equal to f of x1 for all x1 comma x2 belonging to a comma
बी। और इस टर्म्स में कहना चाहे इफ आउटपुट कंटिन्यूसली द आउटपुट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट विद द इनपुट। तो इसी डेफिनेशन को यहां कहना चाहे और आउटपुट increases or remains constant with increasing input. To be more specific, even you can write at the value increasing here. So with the increasing input. So now I hope everyone understands the difference between strictly increasing function and non decreasing function. इसमें जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट की वैल्यू को बढ़ना ही पड़ेगा, बट इसमें इनपुट के साथ या तो वैल्यू बढ़ेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। इसी को ग्राफिकली समझते हैं। सो लेट अस से दिस इज आवर इंटरवल a कॉमा b। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ड्रॉ करती हूँ। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन से कि जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ेगी आउटपुट की वैल्यू हमेशा बढ़नी ही चाहिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इवन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे इनपुट बढ़ा आउटपुट बढ़ता गया। और इवन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इन फंक्शंस में क्या हम देख रहे हैं कि एज इनपुट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इवन इंक्रीजिंग, इट इज नेवर रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो बोथ आर टाइप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस ओनली, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। सो लेट अस से ये है हमारा इंटरवल a comma b this case में। so there is telling either the value of output will increase or remain constant with the input. So a function could be of this type. so हम क्या देख रहे हैं, या तो वैल्यू बढ़ रही है या फिर कांस्टेंट हो रही है। तो इस रेंज में वैल्यू बढ़ी, इस रेंज में कांस्टेंट रही, फिर बढ़ी, फिर कांस्टेंट रही, फिर बढ़ी और फिर कांस्टेंट रहे। What I'm seeing, with the input the value of the output is either increasing or remaining constant, or the function could be even of this type. So this is even a type of non-decreasing function. या तो input के साथ value बढ़ रही है या फिर constant रह रही है। So this is an example of strictly increasing function. And this is an example of non-decreasing function. I hope ये डिफरेंस सभी को क्लियर है। ये दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शंस है, दोनों में ही वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वैल्यू सिर्फ इंक्रीज ही हो सकती है, कांस्टेंट भी नहीं रह सकती। जबकि वह नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ईदर द वैल्यू कैन इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट विद द इंक्रीजिंग इनपुट। I hope सभी को डिफरेंस क्लियर है। Now let us observe one more property related to this. मैं ये साइड इरेज कर दूं। So what we have seen here is with strictly increasing function, functions, what we have is x1 less than x2 implies us f of x1 must be less than f of x2. Now let us try to calculate left hand limit and right hand limit for this. So left hand limit in this case would be f of x minus h, sorry, left hand derivative in this case would be left hand derivative in this case would be f of x minus h minus f of x divided by x minus h minus x. So this is equals to
f of x minus h minus f of x divided by minus h. Now we know कि f of x minus h से बड़ा है, इसका मतलब ये जो ऊपर क्वांटिटी है वो होगी नेगेटिव और माइनस h is a negative quantity. So what we get that the left hand derivative is a positive quantity. Similarly, let us calculate the right hand derivative over here. Right hand derivative is this case में क्या होगा? f of x plus h minus f of x divided by x plus h minus x. In both the cases, limit h tending to 0. Now x plus h x से बड़ा है, इसका मतलब f of x plus h भी f of x से बड़ा होगा. So I'll say numerator would be a positive quantity and denominator is h, which is again a positive quantity. So what is the right hand derivative? It is a positive quantity. So what I'm observing is, for strictly increasing functions, the left hand derivative is a positive quantity. The right hand derivative is even a positive quantity. So I can very assuredly say that the derivative for a strictly increasing function would be always a positive quantity, or f dash x in case of strictly increasing function would be always greater than 0 or a positive quantity. Now let us observe the same thing. Try to observe the same thing in case of non-decreasing functions. So non-decreasing functions क्या कहते हैं? कि if x1 is less than x2, then f of x1 can be either equals to x2 or could be less than f of x2. So if we try to calculate left hand derivative in this case, it would be f of x minus h minus f of x upon x minus h minus h x. So now f of x minus h and f of x, या तो f of x minus h f of x से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा. Once again, x minus h से बड़ा है, so या तो f of x minus h से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा. तो either the numerator would be a positive quantity or would be a 0, and the denominator would always be a positive quantity. The complete derivative would be either a positive quantity or a 0. Similarly, if we try to calculate the right hand derivative in this case, this would be f of x plus h minus f of x divided by h, x plus h minus x, that would be equals to h. Now x plus h x से बड़ा है, तो f of x plus h will be either greater than f of x or equals to f of x. So again the numerator can be either a positive quantity or a 0, and the denominator would always be a positive quantity. So this is equals to either a positive quantity or a 0. And just a correction, in this case हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस h होगा, वो जो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा, और न्यूमरेटर में या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा, क्योंकि x माइनस h या तो f of x से छोटा होगा या इक्वल होगा. दिस वुड बी ईदर अ नेगेटिव क्वांटिटी और अ 0. इन ऑल दिस वुड बी ईदर अ पॉजिटिव क्वांटिटी और अ 0, और इन दिस केस you even get right hand derivative as a positive quantity or a 0. So what we can say for non-decreasing functions is that the differentiation f dash x for a non-decreasing function is either going to be 0 or it either would be equals to 0. So for strictly increasing functions, the derivative is always greater than 0, but for non-decreasing function it is either greater than 0 और is equals to 0. I hope यहाँ तक सभी को clear है एक एक topic. Now let us try and study the classifications of the strictly increasing function. हमने देखा था कि increasing functions divided as strictly increasing and non-decreasing. For strictly increasing, x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2, or f dash x would be greater than 0.
or as the input increases, output always increases. For non-decreasing functions, x1 less than x2 implies f of x1 is less than or equals to f of x2, or f dash x is either greater than or equals to 0, or with the increasing input, output either increases or remains constant. So now we are completely acquainted with two terms, that is strictly increasing function and non-decreasing function. अब इसके बाद let us try to understand the classification of strictly increasing functions. So मैं right hand side erase कर देती हूँ. So what we know about strictly increasing function till now is, if x1 is less than x2, then f of x1 would be less than f of x2, or for strictly increasing function f dash x would be greater than 0. Now based upon the value of f double dash x, which is equals to d by dx of fx f dash x, or equals to d square by dx square of f of x, we can further classify strictly increasing functions. So f double dash x की वैल्यू के बेसिस पे हम strictly increasing functions को और आगे क्लासिफाई कर सकते हैं. So based upon this, strictly increasing function can be classified into three types. So the type 1 is when f double dash x is greater than 0. So the type 1 is f dash x is greater than 0, ये तो सारे strictly increasing function के होगा. The second is f double dash x is greater than 0, or the function is concave up. Now before explaining the physical significance of this type of function, let us first see what does f double dash x signifies. F double dash x signifies the rate at which function f of x is increasing. So f double dash x says me the rate at which my function is increasing or decreasing, and since we know that we have an increasing function, I can say f double dash x signifies the rate of increase of function. So if I say f double dash x is greater than 0 or the function is concave up, then what I say is rate of increase of f of x is greater than 0, or the rate at which my function is increasing is greater than 0. And in this case, the graph of the function would be somewhere of this sort. The function would have a concave up, so it would be increasing with an increasing rate. So function कुछ ऐसा होगा. If this is my x1 and this is my x2, और मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट f of x लूँ, so this would be f dash x and f double dash x would in this case would be greater than 0. तो f dash x तो पॉजिटिव होगा, f double dash x भी पॉजिटिव होगा, और जिस रेट से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वो भी पॉजिटिव होगा. The next way in which next type of classification is, let type 2. In this case, f double dash x is equals to 0 or slope is constant. So मतलब फंक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, पर जिस रेट से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वो रेट कांस्टेंट है. तो इस केस में फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा. इफ दिस इज x1 and this is x2, the graph of the function would be somewhere of this type. Function is increasing, but the rate at which it is increasing is constant. Thus, the function has a constant slope. The third type of classification in this is f double dash x is less than 0, or it has a concave downwards. So, what I can say is the rate of increase
ऑफ फंक्शन इज नेगेटिव। मतलब फंक्शन तो बढ़ रहा है बट जिस रेट से फंक्शन बढ़ रहा है वो रेट घट रहा है। मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट द रेट एट विच इज इंक्रीजिंग इज नेगेटिव। मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो इन दिस केस द स्लोप ऑफ द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वुड बी समवेयर ऑफ दिस टॉप। सो इट विल बी अ concave down. So if this is x1, so this is x2, so this is going to be f of x1 and this is going to be f of x2. So these are the three ways in which we can classify a strictly increasing function. Type 1, f double dash x would be greater than 0, and what this physically signifies, the rate at which our function is increasing is even increasing. The type 2 is f double dash x is equals to 0, means the function is increasing but it is increasing at a constant rate. And the third is f double dash is less than 0, means the function is increasing but the rate at which it is increasing is itself decreasing. So these are three ways in which we can classify strictly increasing function. So we started with discussing monotonic functions. A function which either increases or decreases in an interval is a monotonic function. Then we came up to strictly increasing. We came up to increasing function. Increasing function can be classified as strictly increasing function or non-decreasing functions. Increasing functions, x1 less than x2, f of x1 has to be less than f of x2. Non-decreasing function, x1 less than x2, f of x1 has to be either less than or equals to f of x2. Then strictly increasing function can be classified on the basis of f double dash x. The rate at which the function is increasing is even increasing. The rate at which the function is increasing is constant. The rate at which the function is increasing is itself decreasing. So these are the three ways. These are the three ways in which we classify strictly increasing function, and then we can classify monotonic function in terms of increasing functions. Now let us discuss decreasing functions. So जिस तरीके से हमने इंक्रीजिंग फंक्शन को क्लासिफाई किया था, ऑलमोस्ट सेम वे में वी कैन इवन क्लासिफाई डिक्रीजिंग फंक्शंस. So we will not discuss decreasing function. I hope सभी ने नोट डाउन कर दिया होगा. आप सभी इसको नोट डाउन कर दीजिए. Then we will start discussing decreasing functions. So everyone, please note down this completely. Now let's discuss decreasing functions. Now the way increasing function could be classified as strictly increasing function and non-decreasing functions. Decreasing function can be classified as strictly decreasing and non-increasing functions. हम डिक्रीजिंग फंक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ maintaining the analogy, what will be the definition of strictly decreasing function? So function would be defined as strictly decreasing on interval a comma b if x1 less than x2 will imply f of x1 would be greater than f of x2, or increasing input will decrease the value of output. या फिर जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे हमारा आउटपुट डिक्रीज होगा. Such type of functions are called as strictly decreasing function. And how will we define non-increasing function? So function is defined to be non-increasing on interval a comma b if x1 less than x2 will imply either f of x1 is greater than or equals to f of x2 for all x1 x2 belonging to a comma b. यहाँ पे भी for all
x1 x2 belonging to a comma b, और output decreases or remains constant with increasing input. So what we see here is the output only decreases with increasing the input, but in that case the output decreases or remains constant with the input. Now अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होगा? It would be of this type. If this is x1 and x2, the function would be always decreasing in this interval. और कुछ इस तरीके का भी हो सकता है. The function is always decreasing in this interval, or it can be of this type. In this case even हमारे function की value हमेशा decrease हो रही है. In this case the function has a concave down. In this case the function has a concave up. In this case the function has a constant slope. और अगर हम non increasing function discuss करें तो किस तरीके के होंगे? So ये है हमारी x axis, and if this is our range, the function would be something of this sort, या फिर कुछ ऐसा. So पहले फंक्शन इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज, कांस्टेंट. सिमिलरली हम नेक्स्ट वाला देखें तो फंक्शन किसी रेट से डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ. So what we see here is, so these are the graphs of strictly decreasing function, decreasing functions, and this is non-increasing functions. I hope आप ये नाम समझ पा रहे हैं. When it says strictly decreasing मतलब सिर्फ डिक्रीज ही करता जा रहा है. नॉन इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन इंक्रीज तो पक्का नहीं कर रहा है, लेकिन या तो डिक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, पर इंक्रीज पक्का नहीं करेगा. So this is what we mean by non-increasing function. Now if you try to calculate the left hand derivative in this case, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा f of x minus h minus f of x divided by minus h. Now f of x minus h f of x से बड़ा होगा क्योंकि x minus h x से छोटा है. So this would be a positive quantity and denominator is a negative quantity. So what we get a left hand derivative in this case is a negative quantity. Similarly अगर हम इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, so that would be f of x plus h minus f of x divided by h. It will be x plus h minus x, which will be equal to h. Now f of x plus h will be less than f of x because x plus h x से बड़ा है. So the numerator would be a negative quantity, denominator is a positive quantity, and we get a right hand derivative to be a negative quantity. So इस केस में left hand derivative negative है, right hand derivative भी negative है. So I can say that the derivative of a strictly decreasing function is always a negative quantity, or I can say f dash x will be always less than 0. Similarly अगर हम इस केस में f dash x कैलकुलेट करना चाहें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा सेम f of x minus h minus f of x upon minus h. So न्यूमरेटर इस केस में क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव या फिर जीरो, सॉरी या तो पॉजिटिव या फिर जीरो, और डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा नेगेटिव. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, या तो नेगेटिव क्वांटिटी या फिर जीरो. एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेम, इट वुड बी f of x plus h minus f of x divided by h. x plus h या तो x से छोटा होगा f of x से या फिर उसके इक्वल होगा.
So numerator would be either a negative quantity or a 0 divided by a positive quantity. So it will be even a negative quantity or a 0. So what we get from here is the derivative can either be a negative quantity or a 0. So for a non-increasing function, f dash x will be either 0 or equals to 0. So for a strictly decreasing function, f dash x would be always less than 0. Non-increasing function, f dash x would be less than or equals to 0. Just try and compare this with increasing functions. Strictly increasing, f dash x greater than 0. Non-decreasing, f dash x greater than or equals to 0. The same analogy we can develop in case of decreasing functions. So now we know how we can define categorize decreasing functions. Strictly decreasing, f dash x greater than 0, या फिर अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 पक्का f of x2 से बड़ा होगा, या फिर जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ा रही हूं तो मेरा आउटपुट कम हो रहा है. The next is a non-increasing function. f dash x या तो 0 है या फिर less than 0 है, या फिर if f x x1 is less than x2, so f of x1 is greater than or equals to f of x2, या फिर जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ाऊंगी मेरा आउटपुट या तो कम होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा. So this is how we can classify decreasing functions. Now the way we classify strictly increasing function, we can even categorize strictly decreasing function on the basis of f double dash x, that is the rate at which the function is decreasing. हम इस क्लासिफिकेशन को भी साथ में देख ही लेते हैं. सभी ने ये नोट डाउन कर लिया था ना, मैं इसे इरेज कर